Hey, good afternoon. How you doing? It's so good to see all of you on the stream already. Lovely, lovely, lovely. So, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की। हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस तो काफी डिटेल में किया है। इफ यू वांट थियोरी सेशंस डिस्क्रिप्शन में है। बट टुडे इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो एनसीईआरटी वाला सेक्शन हम लोग करते हैं ना, हर रिवीजन सेशन में, फास्ट ट्रैक सेशन में हम लोग शुरुआत में एक एनसीईआरटी चैप्टर खोलते थे, वी गो ओवर इट, देन वील डू क्वेश्चंस, वील ट्राई एंड डू समथिंग सिमिलर, बट आज हमारा जॉब इज गोइंग टू बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, आई विल शो यू हाउ एंड व्हाई। खैर, बट इट्स आल्सो इजी फॉर यू। ये सेशन के लिए हमको थोड़ा जो करना पड़ेगा एफर्ट, बट फॉर यू बहुत सिंपल है, क्योंकि जो भी आपको पढ़ना है लैब मैनुअल में है। सी, आई हैव गिवन यू लिंक्स टू एनसीईआरटी लैब मैनुअल, गलती आपने कभी नहीं खोला तो प्लीज लुक इट अप देयर। Rajanya, Devanshi, Teesraj, Radhika, Saloni, Hare Krishna, Pampa, Piyushi, Vaishnavi, good afternoon to everybody. How you doing? How you doing? Very, 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 very nice to see all of you live right over here. So how confident are you on a scale of 1 to 10 about practical chemistry? Where are we? We are right here. आज है 30th of January. एक दिन before the end of this year. Wow, what a day, huh? What a day. We are right here. 30th December, Saturday. How strongly do you feel about practical chemistry? आसान है, मुश्किल है? What do you think? आपके हिसाब से? Broadly, practical chemistry can be, just be put into this bucket, right? आप इसको बना सकते, देखो केमिकल एनालिसिस में हो सकता है यू हैव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपको फिगर आउट करना है कि, सॉरी, क्वालिटेटिव में टू सी कितना नंबर है, लाइक मास कितना निकल रहा है, वो सब चीजें, राइट? दिस इज मोस्टली मोल कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन। ओके, मोल कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं ब्रॉडली, बट इट्स एक्सटेंशन ऑफ दैट। क्वालिटेटिव में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, बहुत डिटेल में किया है, ठीक है, विच इज सॉल्ट एनालिसिस वी हैव डन इन डिटेल। ऑर्गेनिक वाला आपको देखना है तो नितिका इज डूइंग इट, यू कैन चेक दोस आउट, राइट? फिजिकल और इनऑर्गेनिक इज व्हाट आई एम डूइंग प्राइमरीली। ग्रेविमेट्रिक, टाइट्रोमेट्रिक, ये सब क्या बोला है, ठीक है, मास और वॉल्यूम, एंड टाइट्रोमेट्रिक इज ओनली वॉल्यूम मेजरमेंट, एंड दिस इज बेसिकली रेडॉक्स टाइट्रेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन, रेगुलर न्यूट्रलाइजेशन, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। और इन सब पे हम लोग सवाल करेंगे, चुन चुन के सवाल करेंगे, एक एक को करेंगे। बट आई एम ग्रेट, हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग? गुड टू सी यू। प्रेम, सुल्ताना, सॉरी, तमन्ना, रक्षिता, रिचा, तीर्थराज, good to see all of you. Sayan, what's up, what's up, what's up? 5 says Rajanya, 3 says Piyush. All right, this session is different, color अलग है इसलिए अलग लग रहा है, it is different, I'll show you how. So मैंने एक लिंक दिया था आप लोगों को एनसीईआरटी के लैब मैनुअल का, if that got lost because of chat, मैं फिर से यहाँ पे डाल रहा हूँ, प्लीज इसको आप लोग भी खोल सकते हैं, not right now but generally if you want, it's a good thing for you to keep that open during your study for this topic, yeah, for everything with practical chemistry. Besides that, yeah, this link also could be useful. This has links to everything. Good afternoon, Tanu. Everything I've worked on. Let's look at NCERT. Now, our job is going to be a little bit hard. ठीक है, NCERT देखने के लिए मैंने ये खोल लिया, ये वाला आपका NCERT वाला लिंक। Go to class 12 and देखिए केमिस्ट्री की ये सारे लिंक्स आर रेलेवेंट टू। थोड़ा छोटा होगा, लेट मी मेक दिस स्लाइटली लार्जर, या दिस इज बेटर। यू हैव कोलॉइड, यू हैव केमिकल किनेटिक्स, होमोकेमिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्रोमैटोग्राफी। खैर, we'll see. We will cover some of these in questions today, but आपको थ्योरी में सब कवर करना है, ओके? That's why I said कि आपका काम थोड़ा सा इस केस में मुश्किल होगा, मुश्किल इन सेंस की, लुक, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, शुरुआत से लेट्स स्टार्ट, ओके? यहाँ पे इस लैब मैनुअल में इतने लिंक्स थे, ठीक है, आई जस्ट गो ओवर इट क्विकली अगेन, कोलॉइड्स, किनेटिक्स, थर्मोकेमिकल, ब्ला ब्ला ब्ला। अब पहला वाला मैं इसको खोल के देख रहा हूँ, आर एफर्ट थोड़ा लगेगा टू आइडेंटिफाई हो क्या रहा है इसमें, इतना ढेर सारी चीजें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। कोलॉइड्स तो सिलेबस से हट गया था, सरफेस केमिस्ट्री, बट नो, सी, इसके बहाने इस पे सवाल आ सकते हैं। If they've put this preparation in दोनों के, that's in your syllabus, okay? Preparation. अगर if you are not sure what I'm talking about, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, एक बार एनटीए वाला भी खोल ही लेते हैं, राइट? एनटीए, नीट, सिलेबस, ये भी देख ही लेते हैं एक बार, ये मैंने बहुत बार खोला हुआ इसको, तो लेट्स ओपन इट वन मोर टाइम एंड लेट्स गो टू यूनिट 13 एंड क्या बोलते हैं, 20, राइट? यूनिट 13 में क्वालिटेटिव एनालिसिस, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजेंस, ये कैरियर्स टेस्ट, वो सब चीजें वो भी विल डू ऊपर ऊपर से। एंड यूनिट 20, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, ये कैरियर्स वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? और क्या क्या है यहाँ पे, FeSCNS फॉर्म होता है, ब्लड रेड, जो भी है, SCN, सॉरी, SCN, ब्ला 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 ब्ला, ये सब है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, ठीक है? इन चीजों को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, एवरीथिंग दैट्स ऑन योर सिलेबस गोइंग टू एनटीए ओवर हियर, ओके? और यहाँ पे देखो, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट भी है, सॉल्स, SOLS, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टू स्टार्ट दिस ऑफ विद। नाउ इट्स गोइंग टू टेक maybe one whole hour for me to just go through all of these 8 things, ठीक है? तो I won't do that. मैं in a brief thing I'll just let you know कि भाई आपको ये 8 चीजें देखनी है, because everything there is some detail about something or the other. Like लायोफिलिक सॉल्ट्स के बारे में स्टार्च है, लायोफोबिक के बारे में AS2S3 है,
FeOH होल थ्राइस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। लाइक भाई ये सब तो हमको अच्छा, इज दिस अ पॉजिटिव सॉल्ट, इज इट अ नेगेटिव सॉल्ट, डू यू हैव टू रिमेंबर इट? थोड़ा तो आइडिया लगना पड़ेगा। सो ऑल्दो सिलेबस से आपको बहुत चीजें हटा दी गई हैं, बट ये सब चीजें हैं। मुझे पहले लगा था प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मतलब लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तीर्थराज, उसमें तो असली मजा आ जाता। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं अभी अपने रूम में हूं, एज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अ ग्रीन स्क्रीन। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बहुत मजा आता है यार, बट आई डोंट हैव द फैसिलिटीज राइट नाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट इन अ सेफ वे। बट उसमें तो बहुत मजा आता फॉर श्योर ड्यूड, दैट वुड बी अ ब्रेकआउट सेशन राइट इफ इट वाज द केस। सो प्लीज रीड दिस पार्ट, ये जरूरी है, ओके। एंड हो सकता है इससे जो है कुछ सवाल आ भी सकते हैं, एंड वी लुक एट सम क्वेश्चन दैट हैव कम इन जेईई इन द पास्ट, क्योंकि नीट में इन चीजों में कम चीजें हैं। केमिकल किनेटिक्स वाला पार्ट आई थिंक यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद, बट this includes this wala part. Look at this right here, hold on, we'll go on to this. Yeah, there is a titration wala business that happens with H2O3. Ooh, and the whole iodine wali cheez kahan gayi bhai? Rukiye we go to that. Look at this, you've got iodine, thoda small hai, so let me make this zoom in. Okay, you've got right on top of my head, you've got iodide ions reacting with H2O2. Ye hai titrimetric thing that was there in your syllabus. Yeah, if you want me to open that up, we will quickly do that as well. Let's go back to this NTA thing right here. Okay, kinetic study of the reaction of iodide ions with H2O2 at room temperature. Okay, that is what we are quickly looking at. I'm practically just showing you where it's at. Okay, now this is a bit of inorganic mixed with physical chemistry, in fact, because there are redox reactions happening over here. तो इससे titration पे चीजें आ सकती हैं। देखो thiosulfate है, it becomes S4O62 minus. This is called the clock reaction. ये आपके सिलेबस में है, इसको प्लीज पढ़िए। ओके, दिस इज द मेन फोकस ऑफ दिस सेक्शन राइट नाउ, टू टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट इन एनसीईआरटी। नाउ वी आर गोइंग थ्रू आयोड, ये क्या बोलते हैं जो लैब मैनुअल है, दिस इज जरूरी है। नेक्स्ट यूनिट वेरी क्विकली मूविंग इनटू थर्मोकेमिकल मेजरमेंट। ये तो पूरा यार थर्मो ही है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, दिस इज जस्ट कैलोरीमेट्री। ओके, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का क्या मतलब है? हीट आती है, आई गिव इट हीट फ्रॉम समवेयर ओवर हियर, इट हीट्स दिस अप, इट हीट्स दिस अप। तो yeah, heat transfer, basically just heat transfer, one place to another. You have ms delta t, then you have c delta t, etc, and you figure out things from there. ये हम लोग डिटेल में कर ही चुके हैं। You have some formulae given over here, but these formulae are not scary. Okay, it is just basic heat transfer. अगर आप thermochemistry पढ़ोगे तो you can derive all of this on the spot. You don't have to mug this. Please do not mug ये सब चीजें, इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं। ठीक है, titration from which book? Anamika, this is NCERT lab manual. Anamika, thank you for asking me that question. I knew that कि बहुत लोग बोले कि अरे ये क्या, ये तो हमने कभी लाइफ में देखा ही नहीं है। देखो पीछे लिखा है ना NCERT, not to be republished. I hope we are not breaking any laws here by sharing the screen, but I think it will benefit you guys. So NCERT also won't mind, right? फ्री में लोग सेशन करें, NCERT won't mind. AITS में सिर्फ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस था, वो सिलेबस में है क्या? पीयूष जी, ऑफ कोर्स है सिलेबस में, वी आर गेटिंग टू दैट, वो भारी पार्ट है। ये सब यार आसान है, ठीक है। द पार्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ व्हिच आर इन से एनटीए में कहा गया, रुको इसको बंद कर देते हैं ना, बहुत ढेर सारे टैब्स खुले हैं। देखो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सब चीज आप इससे निकाल सकते हो, बिकॉज अगर हीट, अब किसी से हीट निकल रही है, कैलोरीमेट्री तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितनी हीट निकली है। सो इनसाइड दिस थिंग हियर, वेयर डिड थिंग गो, राइट हियर इज वेयर द रिएक्शन इज हैपनिंग। ओके, कुछ रिएक्शन निकल रहा है, उससे हीट निकल रही है, दैट हीट गेट्स अब्सॉर्ब्ड ओवर हियर। ओके, वी हैव डन दिस इन थर्मो इन डिटेल, एंड इसीलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। And then the temperature rises. So it's just basic heat transfer. कोई बड़ी चीज नहीं है. All of that is over there. The reason why AIATS में सिर्फ qualitative analysis है और quantitative थोड़ा बहुत है is because बाकी सब चीजें तो regular NCERTs हो जाती हैं. Like even electrochemistry में जो भी ये सब चीजें हैं, this is a part of regular electrochemistry. It's not rocket science. Rocket science होता तब भी हम लोग कर लेते. We've got great physics teachers to do rocket science for you. मृणाल जी. खैर देखो E CU 2+ to CU है, यहाँ पे सब दिया हुआ है. So What I'm trying to tell you is do not get intimidated by the fact कि यहाँ पे देखो है 11 यूनिट, ठीक है, इसमें से ज्यादातर चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने क्या नहीं किया है, मे बी क्रोमेटोग्राफी नहीं किया है, we'll skip over this. I mean that's okay. क्रोमेटोग्राफी शायद सिलेबस में है भी नहीं तो छोड़ो। Titrimetric analysis, redox reactions, this is important. Okay, important, but also I have covered this with you in D block. ठीक है, D block में मैंने आपके साथ ये किया है। अगर if you want to take a quick what do you call it, थोड़ा सा एक साइड बार, just to make sure कोई सोए ना, सर क्या एनसीईआरटी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बुक है? यस शांतनु बिस्वास जी, दिस इज एनसीईआरटी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बुक दैट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस लिंक ओवर हियर। लेट मी गिव यू द लिंक फिर से, इफ इट गॉट लॉस्ट इन द चैट,
दिस इज द लिंक, ओ नो होल्ड ऑन, ये लिंक नहीं है, क्या आ रहा है भाई साहब, नॉट दिस, व्हाट लिंक एम आई ट्राइंग टू गेट, आई एम ट्राइंग टू गेट दिस लिंक, अरे 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 रुक जाओ भाई, क्या हो रहा है, होल्ड ऑन, कॉपी लिंक एड्रेस, पेस्ट, हाँ इट्स मेसिंग दैट अप, खैर एनीवे यार, यू कैन लुक इट अप, यू कैन लुक इट अप ऑनलाइन, ये फॉर्मूला गलत दिया है, एक फॉर्मूला गलत दिया है राजन ने, ओके, कौन सा फॉर्मूला गलत दिया है, खैर, नाउ दिस होल आइडिया ऑफ KMnO4 बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें एक छोटी छोटी बातें हैं जो जरूरी है यहाँ पे, देखो द फर्स्ट थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट इज की एल्कलाइन मीडियम में और जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, नहीं सॉरी, एल्कलाइन नहीं करते हो, मोस्टली एसिडिक मीडियम में करते हो, व्हाई, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स इट गेट्स मेस्ड अप, तो अगर मैं इसको HCl के साथ डालूं तो उसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाता है, देखो, सो दैट्स नॉट गुड, राइट, इफ यू आर ट्राइंग टू क्वांटिफाई समथिंग, अगर ये खुद ही भाई साहब रिएक्ट करें किसी और के साथ, डजंट वर्क, सो इंस्टेड व्हाट वी यूज is oxalic acid, ठीक है, so I use KMnO4 in the presence of say H2SO4, not HCl and not HNO3, because both of these things will get oxidized, okay, ये हो जाए भाई साहब बन जाएंगे Cl2, this also does not work, okay, so this reaction is in your syllabus, ये आप बैलेंस कर सकते हो, do not mug, फिर से लिख रहा हूं मैं, it's like I feel like a doctor, I know obviously I'm not a doctor, you are going to be real doctors, I'm a fake guy right here saying prescribing to you, please don't mug this, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसको करिए, ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल से बैलेंस करना सीखिए इसको, व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से बैलेंस करना, डू रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ओके, और उन दोनों के साथ आप इसको देखिए, अच्छा ये होता है वो होता है, वी हैव डन दिस इन रेडॉक्स रिएक्शंस, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट, ऑल प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में टू गेट दिस, नर्स्ट इक्वेशन, अच्छा का फॉर्मूला गलत दिया है, हो सकता है यार, हो सकता है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द डिटेल ऑफ each and every reaction in practical chemistry because there are 11 of them, but I want to focus on some parts. This was one of the parts that I wanted to spend about at least a minute on, yeah, that this is all there in redox reaction जो हम लोग cover कर चुके हैं, so although it's under the practical chemistry syllabus, कौन सा वाला, let's go back to that syllabus right here, ठीक है, and we'll tick off the stuff we've broadly looked at, we've looked at this because both of this go to calorimetry, okay, और ये क्या है, this also is the colloids वाला part of your this thing, we have looked at this, ये भी हम लोग देख चुके हैं, और क्या बचा, और क्या बचा, टाइट्रोमेट्री एक्सरसाइज, एसिड बेसिस, यूज ऑफ इंडिकेटर्स, यहाँ पे KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर हो जाएगा, है ना, बिकॉज भाई खुद ही कलर पर्पल एंड ऑल ऑफ दैट, अच्छा बाकी क्या बचा, मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4, वो भी वहीं पे राइट देयर इन दैट अमेजिंग यूनिट, नीचे ही जाते हैं, अरे ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट हो गया, राइट हियर, लेट्स गो टू द बॉटम, इसमें ही होना चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड है, कहाँ गए ये, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड, मोर सॉल्ट, मोर भाई साहब कहाँ है, हाँ देखो आ गया बाय टाइटेनियम फेरस अमोनियम सल्फेट, यही तो है मोर सॉल्ट, देखो, आई एम ट्राइंग टू प्रूव टू यू कि ऑल ऑफ दिस इज इन एनसीईआरटी, डरो मत प्लीज, एनसीईआरटी पढ़ो, यू विल बी गुड, यू विल बी गुड, ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, मोर सॉल्ट क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट, एंड यू हैव सम वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल, स्पेसिफिकली 6, ओके, दिस इज मोर सॉल्ट, ये आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स हियर, सो डोंट गेट स्कैर्ड बाय नंबर 68, यार जेई मेन में डायरेक्टली आया था, ओके, जेई मेन में एक सवाल आया था कि अगर आप इसको टाइट्रेट करें, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल्स, एंड इफ यू हैव रेड दिस, आप उस पर टाइम लगाते नहीं, लाइक 68 ब्रो मूव ऑन, बट उसको सॉल्व भी कर सकते हो, उसको सॉल्व करने में पता कितना टाइम लगता है, इफ यू ट्राई टू बैलेंस ऑन द स्पॉट इन द एग्जाम एंड यू ट्राई टू गेट टू 68, लाइफ इज अ लिटिल हार्ड, आई एम नॉट बीइंग लाइक, इट टेक्स यू अ मिनट और 2 minutes टू सॉल्व दिस, अगर बिकॉज़ द नंबर दैट बिग 68, यू डाउट योरसेल्फ, क्या 68 हो सकता है आंसर, 68 वाटर मॉलिक्यूल्स, हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता है, जब इसी में देखो 6 हैं, 6 पानी के मॉलिक्यूल्स इसी में हैं, और फिर और हो जाएंगे यहाँ पे बन रहे हैं, सो श्योर इट इज पॉसिबल, राइट, बट इफ यू हैव डन दिस बिफोर देन यू विल नेवर डाउट योरसेल्फ, अगर आपने पहले कभी किया नहीं है, यू विल बी लाइक यार ये तो पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो, एंड आई एम टेलिंग यू जेईई मेन, बिकॉज पुराने जेईई मेन के सवाल काफी बार नीट में आ जाते हैं, तो ठीक है, और ये वाले आने के चांसेस हैं, नाउ ऑन टू आवर फोकस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने बहुत डिटेल में सेशंस किए हैं, 4 सेशंस किए हैं पूरे, राइट, ऑफ अ लॉट ऑफ दीज कैटायंस, कैटायंस का क्या चक्कर है, मैं आई एम गोइंग अ लिटिल स्लो ओवर हियर, व्हाट्स इन योर सिलेबस, दिस इज इन योर सिलेबस, राइट, दीज आर इन योर सिलेबस, करेक्ट मी इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग आउट, द वंस आई हैव अंडरलाइंड आर इन योर सिलेबस, है ना, अगर कुछ मैं भूल गया तो प्लीज मुझे बताइए, ओके, एनायंस कौन से सिलेबस में, ये है, ये है, ये है, नहीं सल्फाइड नहीं है, सल्फेट है, नाइट्राइट नहीं है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, और बाकी नहीं है, ठीक है, अब इन दोनों, इनका सब क्या कॉमन चीज है, यू बेसिकली पुट विद Ag नॉट NO3 को छोड़ के, इनका क्या कॉमन है, यू दे फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, राइट, एंड दिस इज व्हाइट एंड दीज आर ऑल येलो, और जो भी अलग अलग कलर है, ये सब मैं थियोरी में सेशन में कर चुका हूं, बट इसका आइडिया क्या है, KSP का आइडिया है,
मेन थिंग इज KSP, राइट? अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है मतलब KSP वैल्यूज लो, and with this you have all kind of different things. You put just H2S with HCl, then you put H2S by itself, then you put HCl, this thing, ammonia water डालते हो, NH4OH and NH4Cl, right? All of this has to do with KSP values. जिसकी KSP वैल्यू कम हुई वो जल्दी प्रेसिपिटेट आएगा, जिसकी KSP वैल्यू बढ़ी है वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होगा. We have done this in so much detail. I want you to check out the theory sessions. Easy marks है इसमें, कोई ज्यादा यार ये तो स्कूल में प्रैक्टिकल में किया है. एग्जैक्टली तमन्ना बिल्कुल सही बोला. फेरस अमोनियम हेक्स राजन्या, that's hard to read. Ferrous ammonium sulfate hexahydrate, बिल्कुल सही राजन्या, लवली लवली. या एनसीईआरटी का डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम का चार्ट लर्न करना होगा. नहीं पीयूष, कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है. डोंट वरी अबाउट दैट. आई डोंट थिंक उसकी जरूरत है. आप जो क्वेश्चन देंगे वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा. लवली लवली, गुड टू नो तीर्थराज, लवली, ग्रेट. सलोनी क्या हुआ? You're saying it's loading or something? My net seems to be good. Everything seems to be good here. Okay, if you're facing an issue, let me know. So, इसको प्लीज आप रिवाइज करिए. एंड द लास्ट बिट्स दैट आई फील दैट आर इंपॉर्टेंट, एंड विद दैट इफ यू डू दैट देन यू फोकस ऑल ऑफ दिस. अच्छा ये तो यहीं पे है ना, व्हाई वाज इट? हाँ, जिंक, निकल भी है, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, NH4+, ठीक है, सब है. ये वाले सही थे. इसमें आई फॉरगॉट टू ऐड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के साथ होगा क्या? यू हैव टू ऐड कार्बोनेट, राइट? You have to write carbonate water, HCO3 water, and with this you have to, all of these actually you have to add the same thing. Either आपको add करना है OH, these precipitate as OH minus, zinc precipitates can precipitate as sulfide also, etc etc. We've done all this in theory. ठीक है, that looks like we have covered most of what is there. और क्या बचा? अब बचे डरावनी चीजें जिसको मुझे डर लगता है, बट नितिका जी is amazing at, which is organic चीजें, right? Preparation of compounds. I'm gonna not look at this too much. Preparation of organic compounds. And lastly, test for carbohydrates, fats, and proteins. Now, since organic is not my special friend, yes, I'm not a great organic. I'm not going to go and spend too much time on this. But basics hai, right? Basics from redox reactions even work over here, right? This silver mirror test is basically a redox reaction. Okay. Tollens test, they're all redox reactions. See, this is getting reduced. Oops, hold on. Yeah, these are all redox reactions. Okay, which is why I'm confident I can talk about this. Okay, and this shows results for ketones and alcohols, but not really for, sorry, what am I saying? This shows results for aldehydes and secondary alcohols, but not ketones. That requires a stronger oxidizing agent, right? So the basics are the same whether you do inorganic, physical or organic. अगर आपको redox का idea, strong reducing agent चाहिए, otherwise it does not work out, right? Felling's test, Tollens test are all based on redox reactions. This one's interesting. The iodoform test, कहाँ गया? ये वाला, I don't know if it's in your syllabus. Wow, these have got scary names, huh? I really should not have opened up the organic chemistry. It opens up Pandora's box. Where is iodoform test? Here, Nitika will do this in detail. Okay, let's start with the questions. चलो शुरू करें. आज मौसम था ही नहीं, बारिश वाला मौसम है सलोनी. अच्छा, बैंगलोर में तो यार गर्मी है. It's weird, right? It's very weird in Bangalore. I don't know. It looked like it's going to rain yesterday. I went to ISKCON by using a metro for the first time. It was like an experience. Yeah, मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ली थी. I still ended up working because I had to prepare for this session. But it was awesome because मौसम अच्छा था. Your favorite part of chemistry is organic chemistry. Devanshi, good for you. It was for me too. Once upon a time, I had best teacher for organic chemistry. Like the best teacher for organic chemistry. His name was Mehboob Piral sir. But the point is कि 2006 के बाद से मैंने organic chemistry छू ही नहीं, right? Until about now when I think कि थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए. So yeah. Anyway, let's start. Tollens test must है. हाँ, तमन्ना, when you actually do these tests in the lab ना मजा आ जाता है. The silver mirror that gets formed, patlas, and then that's when you think, oh, मतलब कि अगर आप AgNO से सिल्वर निकालो, you'll be rich. Yeah, you have those thoughts as well. And then वो जो Fe और एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, they look surreal. You know, gelatinous white PPT जो सब लिखते हैं, वो असली में देखने में बहुत मजा आता है. खैर, पुरानी बातें. Let's start. Good afternoon, मुदासिर. Welcome. पहला सवाल. In Geldahl's method for the estimation of nitrogen. नहीं, ये तो ऑर्गेनिक है. आशीष तो ऑर्गेनिक नहीं करने वाला था. But this is not organic. That's what I'm trying to tell you. सब फिजिकली है. देखो, Geldahl's method है, कोई भी मेथड है. We can do it blindly with mole concept. I'll show you how. That's what my goal is to tell you कि भाई कुछ बड़ी बात नहीं है. ठीक है? Estimation of nitrogen present in a soil sample. Ammonia evolved was 0.75 gram of sample was neutralized by this much of H2S4.
the percentage of nitrogen in soil is. This is purely a mole concept question. Purely. Okay, let's try to do this. Stoichiometry wala sawal hai. Try karo. You're from Karnataka? That's lovely. Yeah, Rakshit, I remember. Oh, all right. Sweet, sweet, sweet. Yeah, I just happened to take the metro because मेरे घर से बहुत दूर है. Otherwise, so I haven't been there in I don't know how many years. But it was good. Food was amazing. I went there. The food was brilliant. Met some old friends who used to work at the same restaurant. We used to go to the restaurant a lot when I was at ISC. Answer बताओ, बाकी हम लोग time pass करते रहेंगे. Piyush says A. Poonam Singh also says A. NAVA by W into 1.4. पीयूष डरावना फॉर्मूला देते हुए मुझे इन फॉर्मूले से डर लगता है. ठीक है, I'll tell you why. Because you can do this without any formula. Looks like you're getting the answer anyway. तो ठीक है, तुमको जैसा करना है तुम करो. फॉर्मूला यूज करना है नहीं करो, up to you. जैसा मन आए करो. Okay, the food was great though. Yeah. एंड सरप्राइजिंगली मेट्रो ऑल्सो ज्यादा क्राउडेड नहीं था, मुझे बैठने की जगह मिल गई. बाकी लोग आंसर बताओ. देवांशी, तीसराज, XYZ, राधिका, रीता, ब्रता, पंपा, एंड सब लोग बोल रहे. रीता ब्रता, यू आर न्यू, गुड टू हैव यू हियर एज वेल. ओके, सब लोग बोल रहे हैं, मतलब ये तो बहुत आसान हो गया. चलो, वो खुश हुआ. दैट्स लवली दैट ऑल ऑफ यू हैव फिगर्ड दिस आउट. बट how do you guys do this, by the way? Do you know some sort of formula or did you do it from mole concept? Just like a open question. How did you guys do this question so quickly? XYZ, I see your answer. आपका 4 बार A बोलने से please lock it. Thank you, Rajanya. A is locked from Rajanya and from Rita and from XYZ and from Saloni and everybody else above. But भाई एक बार बोल, 10 बार बोल. How do you guys do this? Let's converse a little bit, right? It's not a one-way traffic fire situation. Did you use some formula? Yes, Trishti, thank you. Or did you do some first principles? Formula, Piyush says, great. But मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूला मत करने की जरूरत नहीं है. Let's try and see how you can do it from first principles. Either way is fine, यार. I'm not for an idea and against it. I'm just saying कि जिन लोगों को फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, उसको यूज करो. जिन लोगों को याद नहीं है वो भी आसानी से कर सकते हैं. ये क्वेश्चन is not one that you need to leave. That's where I'm coming from. ठीक है. फर्स्ट प्रिंसिपल्स. वॉल्यूम कितना रिएक्ट किया? 10 ml. ठीक है. मिलीमोल्स ऑफ NH3 कितना हुआ? Millimoles of NH3 कितना हुआ? It's simply going to be M into V. Why millimoles? Because my volume is in ml, इसलिए millimoles. So far so good. कोई डाउट है तो मुझे रोक देना. Please let me know if you have any doubt whatsoever. In this part especially, I do not mind stopping explaining 10 बार, 15 बार, जितनी बार भी. Because once you do this, you'll solve every question from this topic in your sleep. And मैं बिल्कुल exaggerate नहीं कर रहा हूँ. I'm very serious. It's literally that easy, right? Okay, hold on. Let me get back to this one. Okay, sweet. So, first principle, so concept, formula, ठीक है? Either way works. जो भी है, जैसा ठीक लगे आप लोग करो. बट मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए आया हूं कि आपको फॉर्मूला मत करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? अगर आपने कर लिया है बहुत अच्छा यूज किया, बट अगर नहीं किया है, डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक. So what do? The millimoles of NH3 will then be equal to 2 into 10 into 1, which is simply कितना? Right? 20 millimoles. Okay, cool. So that's 20 millimole. All right. Now, what do I do from here? See, 1 ml has 1 millimole of nitrogen, right? That has been established. Why? Because you've got this whole idea of right here, right? Hold on, let me just go back there. This millimoles of are there in 20. Okay, कितने में? 10 ml में. So 10 ml has 20 millimole. Therefore, 1 ml of the solution will have 1 millimole of nitrogen. Why? Because ammonia में है एक atom N. 20 ml will have 20 millimole. Mass of nitrogen is what? 20 times 14. Remember that I've put everything here. मैंने सब चीजें डाली है. बाद में we cancel stuff out, and what you get, mass of nitrogen to be simply this value right here. Now we can simplify that to remove all these things, cancel stuff out, and percentage is that mass divided by total mass. Okay. So I've done, what have I done here? I've done percentage of nitrogen, which is basically, mass of nitrogen itself in sample divided by total mass into 100. So I didn't use any formula. Do you see that? Yeah, no formula. Oh, great. Chemophile. How do you effectively, you're not, that's Chemophile, I don't understand your question. I think Shiva's stuff is there in detail on the app, on the Byju's app and on YouTube, right? His lectures are there.
थोड़े पुराने lectures हैं, but they're great. And how do you use any lecture is you've got to read a book, Chemophile. You've got to study from a book. But Shiva's taught for JEE Advanced. I'm just being very straight with you. If you're a NEET student, those lectures may be a bit extra for you. But to understand the basics, they're really good. They're really good. Got it? Okay. If you have any doubts, please tell me. I'm going to quickly just recap and हाथ से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. What have you got going over here? Yeah. 10 ml of 1 molar H2SO4. Okay. Into 2 because N factor is 2 over here. Okay. Because I'm trying to get moles. Here. Looks like you're all good with this. So we don't have to spend too much time on this one. Let's go on to the next one. अगला सवाल देखते हैं. Good job everybody. Good afternoon. Once again, super duper. 3.378 gram of an organic chloro compound gave 0.5740 gram of silver chloride in Carrier's estimation. Again, don't get scared by this weird name if you have never studied it before at school. We'll do it even without that. Calculate the percentage of chlorine present in the compound. Percentage of chlorine. ये भी मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया है. ट्राई करो. Right? Well, carriers can be used to do chloro stuff. It can also be used to find out something else. Chloro के अलावा क्या हो सकता है? Chloro के अलावा क्या हो सकता है? आप लोग ट्राई करो. I'll tell you what the test is all about. Yeah? You take fuming HNO3 and what do? You take AgNO3 and what you get is a Ag precipitate. Why? Because chloride, bromide, iodide, all of these form precipitate with this. It's as simple as that. है ना? ठीक है? और बाकी क्या होता है? Carbon content becomes CO2. H content becomes H2O. That's it. That's the test. That's the entirety of the test. Cool. It works for sulfur also. Sulfur में आप AgNO3 ऐड नहीं करोगे. Okay. And it will become H2SO4 और से तुम BSO4 कर सकते हो. खैर, try this question out. वो सब extra information थी theoretical. You don't need any of that to do this question. You need none of that to do this question. आप लोग बहुत शांत हो गए. मुझे तो लगा कि in the time that I explain Carrier's test, you will all give me answers. ये वाला सवाल पिछले सवाल से और भी ज्यादा आसान है. This one is easier than the last question. It's even more direct. Trust me, I'm serious. Oh, प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने आप लोगों को ऑप्शंस नहीं दिए. Is that the issue? चलता है यार, बिना ऑप्शंस के कर लो. एक सब्जेक्टिव सवाल कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तीर्थराज, थैंक यू फॉर द आंसर. 37.6% सेज तीर्थराज. चलता है, बिना ऑप्शंस के कर लो, क्या फर्क पड़ता है? लाइफ में ऑप्शंस हर समय नहीं होते हैं ना. टू फिलोसॉफिकल, सॉरी अबाउट दैट. पूनम, थैंक यू. ऑलराइट, सो 2. तनु, वाओ, ग्रेट. A lot of you are getting answers very close to each other. All right, super duper has rounded it up. ठीक है. Poonam Singh, lovely. Tanu, everyone seems like you're getting the similar answers. Radhika, okay. Tamanna, सही है भाई. I love it. That's great. मतलब आपको इससे डर नहीं लग रहा है. Which is good. कैसे किया इसको? Again, is there some formula for this? कोई formula तो मुझे तो नहीं मालूम है. मैं तो directly unitary method से करूंगा. कैसे? देखो, I think all of you already figured out Devanshi, Tamanna, Vaishnavi and all of that. So, I think this one is doable. How am I so confident? AgCl का मास क्या होता है? 1 mole for 143.5 gram. Let's write it over here. Right? That's the molar mass of this. Percentage mass निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Percentage mass निकालने के लिए what do I do? So, okay. Let's backtrack. So, 143.5 gram AgCl में 35.5 grams chloride होता है. Chlorine atoms होते हैं, chloride जो भी होता है. तो 0.574 में कितना होगा? It is literally just that. It is literally just this unitary method वाली चीज. Okay. अगर इतने में इतना है तो इतने में कितना होगा? Once you do that, you get the moles of this. But एक मिनट, हमको निकालना तो है mass percentage. पर हम लोग मोल क्यों कर रहे हैं? Because, my good friend, it does not matter whether it is mass or mole. Right? Right now at this point in time, it's the same thing. Because all you're doing, looking at the chat. Yeah. Teeraj, you're right. But kyun? Your math is perfect. But why? Why are we doing that math? That's what I'm trying to get at. So,
This right here, not mole, sorry, क्या लिख दिया भाई? This is the mass of chlorine in 0.574 gram of AgCl. This is the mass. Okay. Now I have the mass of chlorine in this. और पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना मास है? यहां पे डाल दीजिए x by 0.378. So whatever I get over here, this is the formula you get. Into 100 क्योंकि हमको चाहिए परसेंटेज. बस खत्म. देखो, this whole chap right here is unitary method. मतलब कि अगर इसमें इतना है तो इसमें कितना होगा? You basically say एक में कितना होता है? Multiply with 0.575. That's 574. That's unitary method. Okay. No moles, nothing, कुछ नहीं. Just directly unitary method से किया. Absolutely. Oh, अच्छा पीयूष, सॉरी यार, सॉरी, मुझे दे देना चाहिए था. Sorry, my bad. पीयूष, mass was, yeah, okay. Should have done that. 1108. उसके बाद, yeah, absolutely. What does this come out to be? कितना आता है? I'm going to be lazy. I'm going to use a calculator. All of you have given me the answer. I'm pretty sure वही होगा. But it's okay. एग्जाम तो आपको देना है, हम तो कैलकुलेटर यूज करेंगे. Okay. Ooh, 37.6 grams. Yeah, scary numbers, but you get 37.6%. Sorry, not grams. Excellent work. You are all so brilliant. I love it. Brilliant, brilliant, brilliant going. Yeah, there you go. Giving you confidence, doesn't it? These questions are from Unit 13. मतलब कि जो ऑर्गेनिक एनालिसिस है, जेल्डाज मेथड, कैरियस मेथड, बड़े बड़े नाम कुछ नहीं है. देखो, सब मैथ्स ही है, सिंपल मैथ्स है, सिंपल सा मैथ्स, आसान सा मैथ्स, राइट? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. अगला सवाल किया जाए, या? रक्षिता नहीं, बट आ सकता है यार रक्षिता, इट्स पॉसिबल. आई होप कि ना आए, फॉर योर गुड बेनिफिट, आई होप कि ना आए. आता है तो करना पड़ेगा. चलो, लेट्स टेक डायरेक्ट क्वेश्चन, नो कैलकुलेशन. अब वी आर डाउन टू यूनिट 20. नहीं, ये भी यूनिट 13 का ही एक्चुअली. यूनिट मतलब कौन सा? फ्रॉम द सिलेबस, नीट सिलेबस. व्हेन बोथ N and S आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द सोडियम एक्सट्रैक्ट विद FeCl3 गिव्स व्हाट? ट्राई करो, ट्राई करिए. यस रक्षिता, थोड़ा सा करना पड़ेगा. नहीं तीर्थराज, that was a question for JEE. I got lazy and I gave you a JEE question. So don't worry. आपको नीट में नहीं आएगा ये. पीयूष says D. Okay. पीयूष, लॉजिक क्या है बताओ? पूनम says C. पूनम and Piyush, let me know your logic behind both these options. Could be either one. Sodium extract with carbon क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, and N and S. अब हिंट मिला. Did you guys get a hint there? तमन्ना says D, तनु says red. तीर्थराज, अरे मेरे बोलते ही लग रहा है सब लोग को हिंट ले लिया. Okay, so if you took the hint, that's great. पंपा, राघव, देवांशी, राधिका, बढ़िया. Looks like we're on the same page here, right? You got sodium, you got carbon, you got sulfur, and obviously you got nitrogen, right? Nitrogen, sulfur are present. So you get NaSCN. The moment you see SCN, you're like, इसको डाला आयन के साथ, it'll give you a blood red color, right? And that should be the answer. That's it. ठीक है? If you want to know the detailed reaction, etc., description में link है. We've covered all this in this thing. Hey, wait, hold on. I think maybe Nitika has covered this. I may not have covered this. I'll have to check. मैंने किया था क्या cover? I don't remember. I think I only did qualitative analysis with you guys over here. मैंने app पे शायद किया है. I think Nitika is probably going to cover this in the organic wala sessions. But anyway, cool. This is the answer to this. Yeah, blood red color. Awesome. Let's move on. Easy question. That's brilliant. अगला सवाल. Oh, एक और. Carious tube, organic compound X is treated with sodium peroxide to form a mineral acid. I've given you hints to this. याद नहीं था that this question is there. I've already solved it for you, but it's okay. आप लोग try करो. Where I fix the blurriness of this camera. Camera माशा बीच में give up कर जाते हैं. The solution of BaCl2 is added to Y to form a precipitate Z. Z is used for the quantitative estimation of the extra element, of an extra element. Okay, X क्या हो सकता है? Wow, wait, hold on. Yeah. Are you guys a little perplexed with this? Try करो. This is a little bit
little bit JEE ka question. Yes, JEE ka question. Okay, it's all right. If it takes time, it takes time. But tell me, how do you start this question? Don't get scared by the fact कि JEE का question. D, okay, super duper says D. I'd like your help with this one. इसमें आप मुझे बताओ इसको शुरू कैसे किया जाए. What is the first thing according to you that is important? कैरियर्स का आप लोग थ्योरी याद है? द कैरियर्स टेस्ट का थ्योरी किसी को याद है? If not, I'll write it down. Don't worry. Carriers test is used for halogens and is used for sulfur. Correct? या तो halogens या तो sulfur. So the compound must have either halogen या sulfur. Are you with me on this? या तो halogen होना चाहिए या तो sulfur होना चाहिए. That should be the first thing you should identify. अब out of these four किसमें halogen और sulfur है उसको रखते हैं, बाकी सबको eliminate करते हैं. That should be your second thought. Yeah. देवांशी जी हाँ, JEE 2023 phase 2 किसी second one of the April वाला I think. Titra says D, Sultana says D, Tanu says B. Good job, good job. But आप लोग सोच क्या रहे हैं? Walk me through your thought. Piyush, thank you for that. So दो लोग Tanu and Piyush saying D, बाकी everybody else Tamanna, Titraj, Poonam and Super Duper saying D. Okay, okay. Which chapter? व्यास जी, Dr. व्यास जी, Carriers tube लिखा है. Carriers tube is from the practical chemistry वाला part. बाकी all of this ये चीजें हैं, I'll tell you, they are from biomolecules. Rest of this is from biomolecules, amino acids, etc., etc. Which means you guys should be good at it, right? आप लोग तो बायो के माहिर स्टूडेंट्स हैं. हिंट दिया मैंने, ट्राई करो. जैसे मैंने बायोमोलिक्यूल्स बोला, कुछ लोगों ने आंसर दिया, Z हैलोजन हो सकता है. ठीक है राजन्या, ओके, लवली. ऋताब्रता is saying B, okay. पीयूष saying मेथियोनिन में S होता है. बायोमोलिक्यूल्स प्रैक्टिकल, अच्छा ये मुझे मालूम नहीं था, प्रैक्टिकल है कि नहीं मालूम नहीं था. खैर, ओके ओके. Do you agree with me? It has to be either X or S. That's what this carriers tube guy says, right? So let's write down the things. And क्या दिया हुआ है कि X मतलब halogen, ठीक है? X मेरा मतलब था halogen. Let me not write X over there. Let's write halogen, ठीक है? Okay. Now what is the reaction happening? X in the presence of Na2O2 gives you Y, BaCl2 gives Z, ठीक है? तो this is either S or halogen, ऊपर लिख दिया मैंने. Fuming HNO3 and AgNO3 के साथ डालो, C becomes carbon dioxide, H becomes H2O and X becomes AgX, which is a precipitate. अगर ये halogen होता, if this was halogen, but none of this is happening, right? None of this is happening. यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, NaO2 और BaCl2 लिखा है. So अगर NaO2 और BaCl2, what does NaO2 do? This is an oxidizing agent. So this becomes a mineral acid. Mineral acid मतलब कि usually could be H2SO4, HCl, etc. दोनों हो सकता है, ठीक है. But this condition specifically H2O2 means कि most likely ये sulfur होगा. And sulfur है और BaCl2 के साथ बन रहा है precipitate, must be BaSO4. Okay, must be. So fuming HNO3 वाला जो चक्कर था, उसके बाद आप डालोगे Na2O2, not AgNO3. This is what makes this carriers test for S. So S goes to SO2, that becomes H2SO4, which is a mineral acid. ठीक है? Cool. So अब हम पक्का बोल रहे हैं हम लोगों ने, if you agree with me, please tell me. Now we have said for sure that sulfur है इसमें. Do you agree with me कि sulfur है इसमें and not chlorine? Sulfur है इसमें. Chlorine in the sense कि not chlorine, chloride, bromide, iodide, chlorine, bromine, iodine नहीं है. Right? वो नहीं हो रहा है. Good afternoon, Medico. How are you doing? Long time. Tanu, C5H11, NO2S. वाह, डरावनी चीजें हैं Tanu. Thank you. Someone is saying D. Biomolecules तो easy है. वाह, super duper. Krebs cycle. There was a meme, right? Krebs cycle has two steps. One is remember Krebs cycle, forget Krebs cycle. Those are two steps of Krebs cycle. That was a meme I saw on Instagram. Khair, anyway, Anchal, what do you think? Yes, are you guys saying yes to something else? Okay, you agree with me it's sulfur. Okay, that's great. Okay, yeah, what's happening with that video? It's going out of sync, not sync. It's getting very, wow. Okay, it's better now. It's better now. Back to good. Okay, so now let's check all these four things इसमें है कि नहीं. Cytosine में नहीं है. ठीक है, there's no S. Is that okay? Please lock D. राजन्या, यार रुक जाओ राजन्या. What is cytosine?
इट्स वन ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस, राइट? डीएनए में AGCT। देखो ऑर्गेनिक मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, ज्यादा प्रेस मत करना, आई ट्राई माई बेस्ट, बट यार ऑर्गेनिक में इतना तो मुझे भी मालूम है कि डीएनए में 4 चीजें होती हैं, ACGT। ये ह्यूमंस में, आई थिंक एनिमल में कुछ और होता है, आरएनए में नहीं होता है, वन ऑफ दिस, यू हैव यूरासिल होता है और समथिंग इन आरएनए। बस इतना, इससे ज्यादा नहीं मालूम मुझे। बट इवन विद दैट नॉलेज आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें सल्फर नहीं है, ठीक है, this does not have sulfur, okay, it's a base, exactly Rakshita, no sulfur, hence not the answer. Methionine, this is an amino acid that has sulfur. It's one of those 3 weird acids, weird acids that have sulfur. Now what are the other 2? बाकी दोनों के नाम याद है क्या? नाम याद है? एक मैंने लिख दिया, दूसरा बताओगे? ATGC, I think there's a lag of 10-15 seconds. बाकी के नाम बताओगे मुझे? AUGC, sure. What are the 3 weird amino acids that have sulfur in them? One is methionine, cysteine, and cysteine. Yeah, it's a weird name. ठीक है, अब मैं क्या करूं? मुझे बायो पढ़ाना पड़ रहा है, बट दैट्स अ थिंग, राइट? ऑब्वियसली मैं बायो नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझे बायो ज्यादा पढ़ा सकते हो, बट सिस्टीन बाल में होता है, राइट? It's in your hair. That's why I know cysteine. So it was easy for me to pick this question. I want to get this question for you guys just because all these random things that are in this, right? बहुत random चीज है इसमें. खैर, sulfur है, this should be the answer. Are you convinced? We'll go through the other options also, don't worry. ऐसा नहीं हम लोग छोड़ के चले जाएंगे. We never do that. We explore all options. We will explore all options. GG, all right, cool. Yeah, all right. What is chloroxylenol? एक और compound. This one's easy. I know xylene क्या होता है. What is xylene? Xylene में 2 होते हैं, एक बेंजीन रिंग डाल दो और 2 CH3 डाल दो, राइट? So you have ortho, you have para, you have meta xylene, right? You have all 3 of them. और xylenol, chloroxylenol, एक जो क्लोरीन डाल दो, एक जो OH डाल दो, that is chloroxylenol, chloroxylenol, ठीक है? There is no S, hence ये भी आंसर नहीं है, ठीक है? Don't get scared by all these weird things. सम्राट जी, हिंदी में तो पढ़ा रहे हैं, और कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं? कोडॉन नहीं पूछा, मुझे भी नहीं मालूम है यार, कोडॉन, आई डोंट नो व्हाट कोडॉन इज। या पूनम अभी भी सोच रही है डी होगा। अरे मैंने बी बोला, डी कैसे हो सकता है? वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड द आंसर इज बी गाइस, देयर शुड बी नो डाउट द आंसर इज बी। इट्स ओके यार, सही गलत होता रहता है, एंटीसेप्टिक, ओके, ऑलराइट, कूल। सम्राट जी थोड़ा एफर्ट लगाओ कमेंट डालने में, सेम कमेंट बोलोगे तो 3 बार तो क्या कुछ बदल जाएगा? Oh, AE is a start. Guys, you guys are just messing with me by going into hardcore biology now. Don't do that. Don't do that. ठीक है? Let's focus on the chemistry part of biochemistry, if you can, if you don't mind. ठीक है? Hey, someone is still saying the answer is D. The answer is B, right? You're convinced कि B is the answer? कोई बीच में बोला कि D is the answer. I'm just talking to that person who said D is the answer. D can't be the answer because B is the answer. Single correct है ये. Okay. And dude, like a nucleotide, isn't cytosine also a nucleotide, right? They're just, yeah, nitrogenous bases. So ये तो आंसर नहीं होगा. Cool. Answer is methionine. Am I pronouncing it correctly? I hope I am, because this has sulfur in it. Okay. Cool. Shall we move on? आगे बढ़ा जाए? Yeah. राजन्या, मेडिको, तमन्ना, excellent work. सम्राज क्या यार, टाइप करके मैसेज ट्रैक करते हो, ऐसे कावर्डिस एक्ट कौन करता है सम्राज? क्या यार, आंसर बताइए। अरे सुपर डुपर, कोडॉन भूल जाओ यार अभी के लिए, माफ करना कि, बट इट्स गुड दैट गॉट यू गाइस चैटिंग एंड एक्साइटेड अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ इन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन जनरल, बट आई वोंट इवन ट्राई टू मतलब get into that because I have no idea about any of that. I do understand chemistry to a decent extent. With that idea, अगर आपको पक्का नहीं मालूम था कि मेथियोनिन में क्या होता है क्या नहीं होता है, even then you could have arrived at the answer. Now, here's the positive side of this. इसको जल्दी कैसे करना है? How do you do this very quickly within 15 seconds, right? Because in NEET, that is the most important thing. 15 second, 20 second वाले करने वाली चीज, कैरियस ट्यूब मतलब either sulfur या फिर halogen. Okay. अगर halogen होता, then you would have a precipitate with Ag. Okay, that is not happening.
It is saying precipitate हो रहा है BaCl2 से. This must be sulfate. This must have sulfur. साइटोसिन में सल्फर नहीं होता है, क्लोरोसाइन में सल्फर नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड में नहीं होता है. आंसर मस्ट बी बी. आई हैव नो आइडिया व्हाट इज मेथिओनाइन. आई डोंट नो इट. Even then I can mark the answer and move on because बाकी में नहीं होता है सल्फर. That is what I want you to get good at. And this is the best scammy way of getting through this test, right? You can do that. It's okay. पढ़ते समय हम लोग सब पढ़ेंगे. But when you're looking to crack a test, this should be your attack focus. Yeah. All right. Next question. 29.5 milligram of an organic compound containing nitrogen was digested according to Gelda's method, and the evolved ammonia was absorbed in 20 ml of 0.1 molar HCl solution. The excess of the acid required some amount of NaOH solution for complete neutralization. ये भी मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, कर लो. This I feel is very doable, very doable. Eliminate, exactly. Yeah, absolutely super dope. I like the question too. इसलिए मैं आपके साथ I brought this question to you. Good afternoon, Nikhil. Try करिए. सम्राज भाग गए, करोगे सवाल? हरजोत, let's solve this question, please. Yeah, Poonam, Rajanya, awesome. Let's do this one. Tamanna, yeah. Rakshita, you good? ये वाला करें? Let's do this one. How do you start this? Neutralization हो रहा है. It's like you take some acid. So obviously इसमें पानी acid नहीं है. You pour it and थोड़ा excess बच जाता है. Some of it evolves. Let's go all the way back, right? You do Gelda's method. उसमें से कुछ अमोनिया निकलता है. That ammonia gets absorbed. Absorb मतलब react कर रहा है ना. Absorb क्या होता है? It's getting reacted. What is this? NH3 plus HCl. This is a neutralization reaction. You get NH4Cl, एक salt, खत्म, right? So it's getting reacted. अगर react किया तो एक्स्ट्रा क्या बचा? जो एक्स्ट्रा एसिड बचा, एक्स्ट्रा एसिड में NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है. ओके, एक्स्ट्रा एसिड कर रहा है NaOH के साथ रिएक्ट. दैट इज न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, और बी लिटिल केयरफुल. डूएबल. अरे वाह, दिस गाइज नेम इज लल्लू. दैट्स अमेजिंग. XYZ says D. XYZ एक बार बोल यार. ठीक है, गुड, ग्रेट, lovely that you got the right answer very quickly. I don't know the answer right or not. You gave me an answer very quickly. That's great. XYZ said D. Medico says C. Hey, Medico, aren't you the person who was who would join those, would multitask? You would join a second class and also do this session. Aren't you that person? और कोई आंसर दे रहा है? Piyush, okay. A lot of hellos in the between. Sorry if I missed out some options. Tamanna says D. Piyush says C again. Looks like the bit between C and D, right? Teethraj also saying C. Wow, you guys are active. Okay, lovely. That's great. Rakshita saying C. Shrishti saying C. Vaishnavi saying C as well. Pampa saying C. Devanshi, Tanu, Radhika. I'm sorry if I missed anybody out. Poonam also saying C. Because बीच बीच में कोई लोग hello बोल रहे हैं, which is like, okay, hi to you too. Let's do the question, guys. Zahur says A. अच्छा, ठीक है. All right. जय सीताराम. Okay, that's very cool. Answer भी दे दो. राकेश भाई, देवांशी and Rajanya are all saying C. Looks like the majority of you are saying C. कुछ लोग बोल रहे हैं D. हो सकता है C होगा आंसर. कैसे करें? How do you do this? Let me write this down. It's clear. Clarify. HCl is reacting with NH3 to give me NH4Cl. ठीक है. उसके कितने moles होंगे? I need to get that, because if I get that, then I can get percentage of nitrogen in the compound. That is HCl absorbed, which is this reaction, minus this guy right here. Okay. So पूरा react किया इसके साथ. The whole thing reacted with this chap right here. Okay. And the excess amount then went with NaOH. So if we were to write that down, it's basically this number. Yeah, HCl कितना था? 20 into 0.1. Okay. That is, you can just do M1, V1 because they're all N factor 1. So it's cool. Yeah, you don't have to worry about normality in this case. And NaOH से कितना मिला फिर? Okay, then you needed 15 into 1. मतलब what remained was 0.5 millimole. Why am I writing millimole? Because we use ml. So M into V will give me millimole when I use ml. Okay, that's why I've written it to be millimole. Now the mass will be that into 14. Why into 14? Because I'm only focusing on nitrogen out of NH3. Okay, इसलिए मैंने
यहाँ पे it should be mass of nitrogen, not NH3. Let me just quickly fix that. Hold on. My bad. Let me fix that. It's mass of nitrogen, not NH3. NH3 होता तो पूरा हम लोग लेते. We would take it to be 17. But we are focusing only on nitrogen from 102. कहाँ गया? Slide number 102. Yes. Mass of N. Okay. Fixed. Also fixing on next slide. Also fixing on slide after that. Oh, choose. No. Hold on. Cool. All right. Let me go back to our amazing slides now. All right. Mass of nitrogen, right? And percentage weight कितना होगा? Whatever mass I got over here by 29.5 again. ये भी मिलीग्राम में है, ये भी मिलीग्राम में दे रहा है. Because I've done millimole into 14 gram per mole, right? What I get is mass of nitrogen in milligram. That's it. What does that give me? That gives me the answer to be 23.7. Again, because you've got both milligram over here, and this mass also is in milligram. Any doubts here, guys? Any doubts? Rakesh, all right, sweet. Nikhil, super duper. Yeah, sorry, super duper. Maaf kar raha hai, I skipped you. That was not my intention whatsoever. A lot of zeros after one, sure, says Teethraj. That's lovely. Badhiya. Excellent work, everybody. Easy question. Or was this difficult? और आप लोग ऑलरेडी कर चुके बिकॉज AI ट्रिपल का सवाल है. AI ट्रिपल का सवाल तो आपने नहीं किया होगा. आप लोग AI PMT का किए होंगे शायद. Great. So how has this been? Now आप लोग शुरुआत में बोल रहे थे. Now let me ask you. AI EEE is between. I don't say it's no way close to JEE Advanced, but it's a little bit higher than JEE Main these days. And it doesn't matter. On a scale of 1 to 10 now, how confident are you about practical chemistry? शुरुआत में आप लोग कुछ 5 या 3 बोल रहे थे. On a scale of 1 to 10, now how confident are you about practical chemistry? Give me an honest feedback. I don't want all of you to say 10, hey. I understand it's not going to happen in half an hour, 40 minutes, में 1 घंटे में थोड़ी ना होगा आपका confidence इतना बढ़ जाएगा. बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है. But I've told you how to get there. I've told you how to get a confidence level of 10 out of 10 because I've given you all the resources to read. I've solved a bunch of questions with you also. है ना? That's good, Rakesh. Welcome. That's lovely. 8, Piyush, I like that. 8 is a good number. 8 is a very nice number. अगला सवाल देखते हैं. चलो, हमने बहुत डिटेल में कर लिया Unit 13. Now we go to Unit 20. I realize now that when I'm saying Unit 13 and 20, I'm talking about the JEE syllabus. I think NEET के syllabus में does it say Unit 13, Unit 20? नहीं, same है. Okay, the same NTA syllabus. हाँ. If you can't see my screen, I'm talking about this, right? We have done Unit 13 till now. अभी हमने Unit 13 बहुत डिटेल में कवर किया है. Yeah, all questions on this. Yeah, a lot of questions on all of this. ठीक है? we have done nitrogen, sulfur, halogens, phosphorus का I haven't done a question. You can check it out here. It's the same thing. Phosphorus का mass अलग हो जाएगा instead of nitrogen, but it's all just this. Then on to this group 20 वाला stuff. Here I'm going to focus primarily on this part, the cation and anions part. The other stuff has been covered in thermodynamics itself या फिर redox में हम लोग cover कर चुके हैं. So in today's session, already almost 1 घंटा हो गया है. I don't think I'll have the time to cover all of it, obviously. But we're going to be we're thinking of doing some sessions for JEE students in next week. If you guys want, you can join that. Yeah, it's going to be paid stuff. It's going to be on the app. More details very soon. Yeah. All right. Let's get back to what we were talking about. Hold on. अरे हम कहाँ चले गए? हम यहीं पे हैं. Don't worry, guys. Unit 20 के सवाल हो रहे हैं शुरू. Can you spend some more time? Yeah, I think थोड़े सवाल बाकी हैं. I've got one. कितने सवाल बाकी हैं? It's a good question. 2. I have to see. Hold on. कितने सवाल बाकी हैं? मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने. 1. Oh, it's easy for me to see. Okay, hold on. I've got question 1, 2, 3, 4, 5. Shoot, 5 सवाल, 5 सवाल बाकी हैं. अगर आप लोग चाहो तो we can extend this to about 15 minutes, if that's okay. 7. I like it. Poonam is saying 100%. Lovely. Radhika, Devanshi, Teethraj, and Tamanna all saying 7. That's lovely. Around 5 questions left. Let's try this out. When a solution, the reason I'm giving JEE Main के सवाल है क्योंकि यार नीट में अभी तक नहीं इतना पूछ रहे थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाले नीट में, इसलिए उसकी प्रैक्टिस मैं आपको दे रहा हूँ. When a solution of mixture having 2 inorganic salts was treated with freshly prepared ferrous sulfate in acidic medium, a dark brown ring, अरे पता चल गया ये क्या है, was formed. Whereas on treatment with neutral FeCl3, it gave deep red color, which disappeared on boiling, and brown red TPT was formed. I have covered this, guys. Like description में links में I've covered this in so much detail. But you'll have to figure this out without that also very quickly. Try करो.
Screen is blurry. Huh. Rajanya, maybe your internet, because my thing is streaming at 4600 kbps and it looks like this is also doing all right. It looks like YouTube says that the stuff is okay. Maybe just bump up your resolution. Yeah. Try this question out, guys. अभी के सवाल I think जल्दी हो जाएंगे. They're all theoretical questions. ये वाला may be a little complicated than the others, but they're all straightforward theoretical questions. Yeah. Okay. Zahur says B. Loving the enthusiasm, Zahur. Thank you for giving me the quick answer. Baki log, what do you think? Shall we write down what is given? Right? You have A and B, some mixture, उसमें FeSO और acidic डालते हो तो brown ring बन जाता है. ठीक है? Okay, that is one thing. दूसरा क्या था? दूसरा बात करेंगे. पहले इसका बात करते हैं. Brown ring test. Now better? Okay, good to know, Tamanna. Zahur says B, Nikhil says B. Okay, और कौन क्या बोल रहा है? Rajanya is brown ring test. Lovely. Brown ring test का मतलब क्या हो? Piyush says A. Piyush, I know you guessed. क्योंकि यार brown ring test मतलब उसमें होगा NO. NO मतलब देखो, you have nitrate ion. आपके सिलेबस में नाइट्राइट है. Actually, नाइट्राइट भी सिलेबस में है. Let me just quickly check. I have a feeling नाइट्राइट भी आपके सिलेबस में है. Let's go back to this. Oh, नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों है. नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों है. इसमें से ये वाला देता है ब्राउन रिंग. ओके, नॉट NO2 माइनस, NO3 माइनस गिव्स दैट टेस्ट. खैर मैं सोचा चेक कर लूं, बट है सिलेबस में. व्हाट यू हैव इज नाइट्रेट आयंस. ओके, इन एन एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2+ बन जाता है ये. दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, तो दिस बिकम्स दिस एंड दिस गेट्स रिड्यूस्ड टू NO. ओके, तो ये हो गया रिड्यूस, ये हो गया ऑक्सीडाइज. यू हैव टू सी दैट, राइट? ये था 5+, इट बिकम्स 2+, ये है 2+ बिकम्स 3+. तो क्लियरली रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. नाउ इस रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद अतरंगी चीजें होती हैं. अतरंगी चीजें, यू हैव a lot of FeSO4. Okay, so although this happened with Fe2+, this reacts further, right? Or yeah, this is where coordination stuff comes to the picture, right? You need to know coordination chemistry to know कि भाई most D block compounds पानी में डालो, when they form colored stuff, it's going to be, you know, these hydrated complexes that they form. And with this, it forms a very, very peculiar brown ring, this right here, complex. Why peculiar? Because इसमें Fe is in +1 state and ये NO ये भी +1 state में है. Okay, I will cover this in coordination compounds, or if you know, this is there in NCERT. ये मैं कुछ बड़ी बात एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ. But the fact that Fe has a +1 state, that is crazy. But ये है NCERT lab में सब है. All right, Piyush, lovely. That's okay, dude. होता है. Don't worry about it. Brown round बनाने के बाद में Kleist line, हाँ, I know, right? When you actually see it, it's very fascinating. I know थोड़ा dangerous compound है, but वो brown ring बहुत सही लिखता है. Like a few many things, like a nice ring, like a perfect actual ring that gets formed if you've seen it. खैर, so the answer is either option B or C. It is not D or A. ठीक है? Brown ring मतलब either one of these. Now, अब बाकी देखना है कि यार ये FeCl, यार if you don't know the second part, it's very hard to guess this. Right? Second part में it is CH3CO- that reacts with Fe3+ to give you this compound, and this then again forms this scary complex, right? Which is this color. Yeah, a brown red PPT is formed when you heat it, etc. etc. ये तो है, ये dissolve हो जाता है. This is the final precipitate that gets formed. So the answer is B, and I'm sorry, like इसको मग करना ही पड़ेगा. But this is again, like this is one of those questions जो बहुत ही extra है. Like अगर नीट में आ गया, they'll be like, bro, why are they giving you this in NEET? But I'm just giving you practice because my job is to get you prepared for anything. इसलिए हम ये सवाल किए. ठीक है, चलो, let's move on. अगला सवाल. This is the right answer. B. Yes, absolutely. Rajanya, Medico, Devanshi, Teesraj. Not sure, but B says Tanu. Yes, Tamanna, Piyush. It's all right. Nikhil. Excellent work. Zahur, सबसे पहले starting that off, the trend off with the right answer. अगला सवाल देखते हैं. Just 4 more questions. We'll cover it in the next 10 minutes, I feel, आराम से. The cation that will not be precipitated by H2S in the presence of dilute HCl is what? I've given you a hint where I've written down H2S क्या होता है. This is not really a hint. This is just like, भाई ये तो होता ही, you know this. Try this out. Okay. Amit, yes, पुराना वाला B था. ये वाला B लग रहा है. I think Rajan, you were talking about the last one. इसको बताओ. I ordered some food from my father. I seem to be always doing that, ordering food. I know, right? Care. Anyway, try this question out.
इसको कर सकते हो. इफ यू हैव पेड अटेंशन इन माय सेशंस, तुम लोग आंख बंद करके कर लोगे. आई हैव डन दिस इन सो मच डिटेल, इट शुड बी वेरी डूएबल. बट अगर नहीं किया है तब भी we'll do it, we'll figure it out together. It could get confusing if you have not attended my classes, because my classes are very straightforward about क्या करना है इसमें, right? There was no doubt whatsoever. But the way a lot of people teach this topic is that they do weird things, they make you mug unnecessary things. But मैंने बहुत clearly आपको बोला था, this has to do completely with KSP के ideas, okay, and nothing else, just KSP ideas. All right, lovely. Please try this out. CO2 plus B, C, A, B. वाह, सब लोग you guys are going all over the place. सारे ऑप्शन, कोई डी नहीं बोल रहा. CO2, CO2 प्लस. अच्छा, CO2 कहाँ जा रहा है? ठीक है. आर्सेनिक कोई नहीं बोल रहा है, बिकॉज आर्सेनिक सिलेबस में नहीं है. बाकी सब लोग बोल रहे हैं. ठीक है, ठीक है, कूल. ऑल राइट, आर यू श्योर? लॉक किया जाए, आगे बढ़ा जाए? इसमें ज्यादा करना क्या है, राइट? यू हैव टू मार्क द आंसर. देयर इज नॉट मच, लाइक अ 30 सेकंड थिंग. इधर यू नो इट और यू डोंट, राइट? इसमें ज्यादा हम लोग कर भी नहीं सकते. तो इन द स्पिरिट ऑफ 30 सेकंड थिंग, हाउ डू यू सॉल्व दिस? लेट मी सी व्हाट एवरीवन इज सेइंग. राकेश सेज CO2 प्लस. ओके, उसके बाद किसने क्या बोला? जहूर सेज बी ऑल्सो. मेडिको सेज सी. अमित सेज ए. पीयूष सेज बी. राजन्या बी. तनु सेज कोबाल्ट. तमन्ना सेज कोबाल्ट. राधिका सेज बी. मेडिको फिर से बोल रही है बी. निखिल इज सेइंग सी. ऑल राइट, लॉक. ओके, ऑल राइट. पंपा इज सेइंग सी. निखिल इज सेइंग सी. लगता है ये, हु इज द वन सेइंग ए? The odd person out. One person said A. Amit. Good job, Amit. Good job, Amit. Stand with the crowd. I mean, stand against the crowd. That's okay. So here's the deal, right? It's okay. It's okay अगर आंसर सही है गलत है. But you got to be sure of what you're doing. Okay. Amit, I think आपने थोड़ा जल्दी कर दी. PB2 plus is the only one that will पक्का precipitate. Right? पक्का precipitate होगा ये. हिंदी वर्ड अंग्रेजी में क्यों रखें? पक्का is PB2 plus. This is literally this thing, right? ग्रुप 0 एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब यही तो इसका है. आप HCl H2S में डालो, उसका KSP वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है. ये कॉमन आयन आ गया, इसका KSP कम हो जाएगा. तो ग्रुप 1 या 2 पक्का होंगे, ग्रुप 4 नहीं होगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट वेरी क्विकली. डू यू एग्री विद व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर? ग्रुप 1 या 2 नहीं होंगे. आई मीन ग्रुप 1 और 2 प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ग्रुप 4 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ग्रुप 4 का KSP वैल्यू इज मच हायर देन व्हाट इज नीडेड, राइट? दैट दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस. अगर ये कॉमन आयन है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कम, ठीक है, which means कि the ones that have a low KSP value will precipitate. How do you know low किसका है? Group 1 and 2 का low precipitate value, which means Pb2 plus, copper 2 plus and arsenic 3 plus will all precipitate. Yes? No? Maybe? What do you think? What do you think? Amit, क्या हुआ? C 100%. Do you see why? Do you see why the answer is option C? Good job everybody, you got right. But it's okay. जिन लोग को नहीं भी हुआ, आप लोग अब समझ गए क्यों ये आंसर सही है. लॉजिक, KSP, लॉजिक मग करके ये वाला आंसर, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व एनालिसिस. ओके, आर वी गुड? आर यू गाइस ओके? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? किसी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी. पूनम ब्रो, बी सही नहीं है, सी सही है. पूनम, okay, tell me what your logic is for B. I'll try and reason with you and we'll get to the answer, which is C for sure. But it's cool. It's all right to have a different opinion. But tell me what you're thinking and I'll walk you through what I think and we'll try and get to, you know, like the right answer. And that's the focus right here. बताओ बताओ पूनम, क्या हुआ? Why by B? Anybody else besides Poonam? Just Poonam. Anybody else who's saying anything other than C, batao. Otherwise, we'll move on. All right.
That's all the time you're going to get because I've ordered my food, so I'd like to move on to the next question. C is right. राकेश क्या हुआ बोल? भाई अभी तो पूरा एक्सप्लेन किया यार पिछले 2 मिनट भाई. राकेश क्या नहीं समझ में आया बताओ. H2S ठीक है यार. One last time I'll explain. One more time. H2S in presence of HCl मतलब there's a common ion. Which common ion? This, right? And pushes the reaction backward, which means sulfur का sulfide ion concentration कम हो जाता है. Which means you need it's lowered to an extent where only things with a small KSP value, मतलब कि 10 power minus, let's say assume 10 power minus 30, 10 power minus 40, these will precipitate out. But cobalt का why do I take hypothetical ones? Let's take actual numbers. अगर आपको नहीं convince आप लोग तो KSP of cobalt sulfide, let's just find that out. Wow, I've got a lot of random things but not cobalt sulfide. 3 into 10 power minus 21 says Bing Baba. Bing Baba बोल रहे हैं 3 into 10 power minus 21. Okay. What about lead sulfide? Lead sulfide. Bing Baba बताइए जल्दी. टाइम नहीं हमारे पास. 3 into 10 power minus 28. Okay. What about copper 2 plus? Copper sulfide. Bing is actually not that bad. Whoa. 2.5 into 10 power minus 48. This guy will precipitate with anything. ठीक है. What about arsenic? Arsenic सिलेबस में है नहीं आपके, बट ठीक है हम लोग सिंस डिस्कस कर रहे हैं. एक बंदे ने पूछा भाई, हम करेंगे एक्सप्लेन. KSP of arsenic 3 sulfide. I know you aren't able to see my screen, but why would you want to see a random this thing? Arsenic sulfide का नहीं दिखा रहा है मुझे आंसर डायरेक्टली. Bing says नहीं, Bing गलत बोल रहा है कुछ. 6 into 10 power minus 6 बोल रहा है. It's too high. खैर, next question. ठीक है. Cobalt has high KSP. Exactly. I've given you numbers, man. और क्या चाहिए आप लोग को? Yeah, dude, Tarun, absolutely. Tarun, I'll let you in a secret. I'm going to do a very similar session on JEE on 2nd. It's going to be a lot like this. ये JEE का ही तो सवाल है. Tarun, please, yeah. Okay. Cool. So please, next question. ठीक है, cool. भाई ठीक है ना? कहाँ गया? राकेश, you good? जी सर जी बोल चुका था. ठीक है. Upon treatment with ammoniacal H2S, the metal ion that precipitates as sulfide is what? एक और सवाल सल्फाइड पे. The point is, all the positive ions, well, barring 1 or 2 of them, a lot of them can be precipitated as sulfide. You'll see which one by this answer, by this one right away. इस सवाल से. Let's go. But be careful. This question could throw you off track also. Tarun, sure bro, you can watch this. Tarun, JEE main और NEET का syllabus exactly same. You know why? I know. Because जब NMC का update आया था, we went live with it and we're like, oh, it's not official, वही है. फिर NTA ने बोला भाई यही है. फिर NTA ने बोला यही है. Copy pasted bro, same date, same circular. NMC update वाला जो था, syllabus same है. अगला सवाल आ गया, करिए. Please try. Please try. That precipitates as sulfide. Poonam says A. Titra is very confident about D. अरे यार पूनम ने ट्रैक कर दिया आंसर. ठीक है. पंपा is also saying D. ठीक है. तरुण बताओ, what do you think? यहाँ पे भी सेम चीज है. H2S giving you H plus and S2 minus. I'll speed it up a little bit. I don't want to waste too much time. It's already 10 minutes past time, right? We'll try and speed it up a bit. Sultana also says, Taman also says D. What is ammoniacal H2S? Ammoniacal H2S is not maniacal or anything of that sort. Bad joke. I don't know why I said that out loud. That was an inside voice joke. But anyway, NH4OH plus NH4Cl. That is ammoniacal H2S. What does this do? This is a weak base plus salt of conjugate acid. मतलब ये है बफर, और बफर कौन सा है? बेसिक पीएच होगा इसका. ये सब मैं आपके साथ बहुत डिटेल में कर चुका हूं इक्विलिब्रियम में, और बार बार बोलता हूं आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के आओ टू डू
salt analysis. Okay, this is proof of that. Okay, so what does basic pH mean? Basic pH means I will add OH minus यहां पे, मतलब ये रिएक्ट करके कम हो जाएगा इसका concentration, it will get consumed, so it will push the reaction in the forward direction. Yeah, right? Equilibrium का basics, अगर इसको कम किया बढ़ जाएगा, उल्टा एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, जो आयन है उसको मैं हटा रहा हूं, वो fill that void, fill that void, move forward. So now I'm increasing the concentration of sulfide ions. Okay, ठीक है, but फिर भी I don't think इस क्वेश्चन में इतनी चीज की जरूरत है. This is a bit of extra information, right? So all of these could precipitate, right? This is all of group 4. Now I've got enough, which is cobalt भाई साहब हैं, Zn2 plus है, nickel 2 plus है, Mn2 plus, Fe3 plus. Now मजे की बात यह है कि Fe2 plus है, but not Fe3 plus, not aluminum 3 plus, not magnesium 2 plus. So answer has to be zinc. What about these two? देखो, both of these precipitate as OH minus. In the presence of this, they precipitate as this. You've got this gelatinous white PPT, etc., etc. इसका, and this also forms like a a precipitate, similar thing but grayish. One of them is grayish, the other one is gelatinous white. I think aluminum is gelatinous white. FeOH whole twice forms this grayish white thing. Magnesium is special, right? Magnesium with bicarbonate, only with bicarbonate, not with this. So zinc is the answer to this question. Any doubts, folks? Shall we move on? Tarun, you'll have to make notes yaar, और क्या करें? Or go to Anki, make flashcards on the computer, or if you don't like that, make actual physical flashcard. और क्या करें इसमें, है ना? CRCRD, very easy, cool. Sasuke, you like dots? Is that Morse code? What are you trying to say? Or are you just spamming for the heck of it? Well, if you want attention, you've got it. Rajanya, Piyush, Rakesh, Poonam, Nikhil, Poonam, lovely work, everybody. Radhika, Devanshi, Rakesh फिर से, Medico, yeah, Tamanna, lovely. All right, let's move on to the next question. A gas X, I'll just take 5 more minutes. I think this is the last question है. इसके बाद एक और question है, but ठीक है, we can stop it here. We'll call this the last question. Last question. Okay, that gives you a nice timeout. Last question. इसको कर लेते हैं, ठीक है? Sasuke, bye. All right. Cool. A gas X is passed through water to form a saturated solution. The aqueous solution on treatment with silver nitrate gives a white precipitate. The saturated solution also dissolves magnesium ribbon with evolution of colorless gas Y. Identify X and Y. Last wala, Devanshi. Look at that. Very quickly, Medico says C with a lot of conviction. Medico maybe attended the class. This question directly from the class that I did. I wanted to see how many of you have seen it. If you've seen my classes, you'll be like, yo bro, ये तो straightforward है. And ये JEE में आ भी चुका है. You want to know which year? This is a JEE advanced question, by the way. I'm not kidding. I'll tell you where it's from, which year. Hold on. What slide number is this? 136. ये है सवाल JEE 2002 का. Before my time, guys. This is from JEE 2002. उस समय एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं होता, was only JEE and AIEEE. And this was when JEE was subjective and had a mains wala phase which was objective, etc. Yeah, itna C. Total of 9 questions. Okay, Rajanya knows the number of questions. I don't know the number of questions. I was like, we'll wing it. I think I had 11 or 12. Did some of them. Yeah, it depends on time. Since I overshot time, I'm not doing a few extra ones. I think I had some more prepared, but I don't want to waste your time. Yeah, we can solve more later. Thank you, Rakesh. Good job, Nikhil, Tamanna, Medico, lovely. और किसने बोला? तीर्थराज, राधिका, पीयूष. Excellent. All right. How do we do this one? देखो, silver nitrate, white precipitate, मतलब it must be chloride ion. This is like, close ion say chloride, hence chlorine. So, but be careful. Some students will mark this or this as the answer, which both of them are not. कौन सा है X? I'm sorry. कौन सा है AgCl? It's this guy here, right? X. So it is either this or this that should be the answer, one of these two. And why is it H2 and not CO2? Because यार MgCl2 को जब तुम react करोगे, when you react Cl2 with water, you get HCl, right? You get acids. And this acid when reacted with AgNO3
will give you this precipitate right here, which we already figured out. That's great. The same HCl then when reacted with magnesium ribbon gives you MgCl2 and hydrogen gas. Hence it should be this. CO2 कहाँ से आएगा? Right? CO2 doesn't make any sense, which you should just get it off and say that this is the answer. Okay. Thank you so much. Thank you very much, everybody, for attending this session. Maza aaya? I hope the confidence meter has increased and it is somewhere around a 7 or a 8. If not, that's okay. थोड़ी तैयारी करो, you'll be good. If you have any doubts, feel free to ping me here on Discord or on Telegram. I'll see you around. हम लोग मिलेंगे फिर से कहाँ पे? हम लोग मिलेंगे यहाँ पे. Ionic equilibrium, your favorite chapter, ionic equilibrium. That's what we're going to do on the 2nd of January. We'll do a few PYQs. We'll play around. We'll get a lot of interesting stuff done. Okay? If you guys want to know what I did in the starting of the session, I'm quickly going to show that screen to you. This right here, right? This is where I've got all the PDFs from. You can also get this. Please don't ask me to upload some PDFs. Like, thoda effort laga lo. Yeah? You can get all of these. Sure, I'll give you the notes of the questions I did as always. That will be in the Akash Baiju's Telegram channel. But this is where I got all the lab manuals from. Yeah, all the units 1 to whatever. All right. Thank you very much. Thank you very much. See you next year. I was waiting someone to crack that joke. Thank you, Teethraj, for starting that, and Devanshi as well. Thanks, Medico. I enjoyed this as well as always. Teethraj and Devanshi and everybody else. Yeah, I'll see you next year, I guess. Happy birthday, Medico! 1st Jan. That's lovely. I have a good friend whose birthday is on 1st as well. Srinivas Nayak. He's a kid now. It's crazy. But yeah, 1st Jan. Happy birthday, Medico, in advance. I'll see you after your birthday, day after your birthday. Hope you will be there on our session when we do practical. Oh no, when we do ionic equilibrium. All right. See you, everybody. Thank you so much for joining this. Medico, happy birthday. See you next year, as a good friend said. Bye. Thank you. Thank you. Thank you so much, everybody.